एवरीवन, तो आज स्टार्ट है मेरा थर्ड डे। तो पहले हमारे कॉलेज में जाकर क्या होता है, 2 दिनों में मुझे पता चला कि पहले तो हमारे लेक्चर्स होते हैं 2-3 घंटे के, जिसमें जो वर्ड्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो वर्ड्स मैं आपको शो करती हूँ जो कि आप सुनते हैं। एंड उसके बाद होते हैं गेम। तो पहले लेक्चर होता है फिर गेम होता है। तो आज देखते हैं कौन से लेक्चर होते हैं, किस टॉपिक पे होते हैं एंड कौन सी गेम होती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। कॉलेज पहुंचते ही मेरी सबसे पहले नज़र गई इस न्यू वैन पे। इस न्यू वैन देखकर मैंने ये आइडिया लगाया कि इसमें रोबोट एंड गेमिंग की इंफॉर्मेशन होगी। एंड इन्होंने हमें स्लिप दी, तो ये स्लिप मैं स्टेडियम के अंदर लेके गई एंड स्टेडियम में जाके स्लिप को रीड किया तो मुझे पता चला ये लोग लैपटॉप एंड गेमिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं। इतने में ही ये खुद अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने आ गए। क्या है कि अप टू 31,000 तक का कैशबैक ऑफर, कैशबैक प्राइस है, ठीक है, जिसमें ना मतलब एक्सचेंज बेनिफिट्स है। कोई पुराना लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको एक्सचेंज बेनिफिट 21,000 तक का मिल जाता है, अप टू 21,000 तक का। एंड जो कार्ड्स हैं हमारे पास में, कोई कार्ड आप यूज़ कर रहे हो उससे आपको अप टू 10,000 तक का कैशबैक मिल जाता है। एंड अदर एसेसरीज हैं जो कि मतलब जिसकी वर्थ प्राइस है 63,000 समथिंग, वो आपको 7,000 के अराउंड में मिल जाता है। अभी 22 अगस्त तक ये ऑफर्स हैं। अभी आपके लोकल डीलर आएंगे हमारे पास में। अगर आप चाहते हो तो हमारी वैन यहीं पे लगी हुई है, आके विजिट कर सकते हो, फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। और जब आपके डीलर मतलब आपके लोकल डीलर आएंगे मैं उनसे कांटेक्ट करा दूंगा। जिसको भी लैपटॉप परचेज करना होगा वो उनसे बात कर लेगा, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार वैन के पास आके एक्सपीरियंस कर लेना सारे लोग, रिक्वेस्ट है, ओके।
finer your program, more optimize your program, means more saving in electricity, power and better performance by the robot. In the second video, what did you see in the second video? There was a player who was playing table tennis. Anna, did you play table tennis? Okay, oh, it's very fun, huh? Now in this table tennis, you might have observed in the first stroke, second, third, fourth, the player was losing. Who was winning? Robot was winning. Because the program was planned and he was playing as per the program. And when that player started winning, when he did something beyond the program, you might have observed on the 10th service, what he did? His ball just touched the net and then it dropped on the other side. It was not in the program and the robot lost that game. In the second, 11th service, what did he do? He has hit the ball in such a way that the ball just touched the edge of that table. And that was also not in the program. So robot could not do it. The player owned the game. And in the 12th service, what happened? He has hit the ball in such a way that the ball just went high above the robot height. Again, it was not in its trajectory, not in the program. So again, player owned the game. What does that mean? Yes, that means who gives the command? Who writes the program? It is you, the programmers, engineers. There is no differentiation. They all, maybe mechanical, electrical, civil, electronics, anybody can write the program. Basic fundamental of programming is same, which you will learn in the first year of engineering. Once you learn basic programming, and then all other, maybe robot program, maybe C++, or maybe Java, maybe web designing, HTML, you take any programming, all fundamental concept is same. सर ने हमें टेक्नोलॉजी की पूरी इंफॉर्मेशन दी कि अदर्स कंट्री में कैसे रोबोट वर्क करते हैं और क्यों करते हैं। अदर कंट्री में रोबोट ही कार बनाते हैं, कार की पेंटिंग करते हैं और भी इंडस्ट्रीज़ के काम रोबोट ही करते हैं पीपल से ज़्यादा। फिर इनको सम्मानित किया गया एंड स्टार्ट हुआ नेक्स्ट लेक्चर जो लाइव से था। Some of the anecdotes. It's not never like a lecture. Okay. So first of all, what is letting go? पंजाबी च की कहने ਆਪਾਂ letting go ਨੂੰ? Anybody who will tell me? ਜਾਣ ਦੋ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ word ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਫਾ ਕਰੋ। Very good, I was expecting this. What else? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? Isn't it? This is all. Art of letting go is also important nowadays. Hanji. So we are going to enjoy and interact only. I am going to share some of the stories with you, some of the anecdotes only. जिमें ਆਪਾਂ normal ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उसी तरह ही you all are comfortable with Punjabi also or I have to switch over to Hindi in between. कोई बच्चा ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So it is wonderfully well. Basically I have been a science student till class 12th, but I never liked to be into the science classrooms. And my passion was literature only. किताबां पढ़ना मैनूं वधिया लगदा सीगा, शुरू तो वधिया लगदा सी, अच्छा लगदा सी. And from there only I could find it कि नहीं, reading books and reading literature is more important for me. Okay. Then every parent is of having some aspirations and some expectations from their kids, and then similarly my father was expecting it from me that I must prepare for civil services क्योंकि अपना बच्चा सब ਨੂੰ लगता है कि बहुत इंटैलीजेंट है। ਈਵਨ ਕੱਲ ਸੇਖੋ ਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I was a type of person कि नहीं, you are expecting much more, मेरे तो नहीं है कुछ होना। I will simply what I will do कि मैं literature पढ़ना है, nothing more or less. But still when he insisted upon that you have to prepare for, you have to go for, I joined Punjab University Chandigarh for formal coaching of PCS examination.
here I learned a lot, though I was not much into that because I could not focus on the civil services, but though my teachers used to tell me कि नहीं, you can do it. पता नहीं मेरे फादर ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ I can never do it and I won't do it. But that was a very learning experience because I could get into touch with the people who were into that field, and I have formed very good friends during that time of period, and even now I am in contact with those people. But at the same time ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and I had some of the experiences which were learnings for me, great learnings for me. You face such things and challenges in your life, that is why I have been coming to that point. Okay, so starting from there I just want to tell you कि वो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, there was one girl and one boy. They were very intelligent, they both of them were wise, and on every issue, every aspect, reading newspaper, they used to sit here, and I used to have a formal talk with them ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਂਟੀਨ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਂਟੀਨ ਸੀ, that was for the scholars only, and similarly we also used to avail that premise. Then what happened there ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, you interact with them the people, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ every day it became a routine for me, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ. Then they were in a relationship and they were from different castes, they were from different backgrounds, and I am not going to name them because most of the people may be even knowing them. The boy and girl both have been selected as civil servants at that time, and the boy was from Punjab itself. Okay, then what happened कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ naturally marriages ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ which I wrote on my that very diary which I used to have there. ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਸੋਰਟਸ ਵਰ ਟੇਕਨ ਆਊਟ because it was intercaste marriage few years back, even the girl was from Haryana, and it was not easy process for them. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ these all are difficult issues and difficult things, but ultimately they got married. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after 3-4 from where I got that information, 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ I called the mother of that girl, and she said it कि she has committed suicide. Why she committed suicide? It is all due to some of the things that we've been into toxic relationships. ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਦਿਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਬੀ ਇਨਟੂ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲਿੰਗ ਟੂ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the circumstances were never clear what happened. They been married and the girl committed suicide after that time. This was a shock for me, and I tried to get some information also, but the things turned out to be that they could not go parallel on it. They could not, and the behavior which you see here in the college, as a teacher I am someone else, as a colleague I am someone else, as a friend I am someone else, and as a mother I am something different. So this is one example. Still another example is, it's again from your life, related to your life. Phones ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, that was there. Everybody knows that story. This is from Delhi. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ there was a boy and a girl of class 12th and 11th. ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ. 11th और 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਫੋਨ ਵਾਸ ਵਿਦ them. ਉਸ ਵੇਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ,
ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਨਫ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਕਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ person may be recording. We are in the life of insecurities and uncertainties with the technology. Though we could not go or do away with the technology, technology is very important. But at the same time, this sort of education is very, very important. That how to use this technology and where you could not use and what could be the repercussions of the same. I intentionally chose this topic after your technological advancement. We have not to be scared of technology, we have to use that, but at the same time we should be wise and we should have that morality and moral sense and ethical sense of ethical practices also. Their value system ought to be there when we are using the technology. Then coming back to my story, ਬੱਚਾ +1 +2 ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ and they were there, it was in the papers everywhere at that time. And then what happened, the boy had some clip of the girl. It was sort of that they were a little bit of in physical intimacy, not directly into anything. Okay, then what happened, जब आप किसी के साथ शेयर करते हो ना, कोई भी चीज़ शेयर करते हो, when you share anything with you, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਯੂ ਸੈਂਡ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਯੂ share the thing. And same thing was done by the boy. He shared with one of his friends, though intentionally he was not. And that stigma is always on the boys that they do such sort of things. Don't mind it, that yes, this is the question on the men fraternity. Not at all. Same thing could happen with the girls also, but their reputation, their sense of honor is more at stake in the society where we are living, है ना, क्योंकि मुंडे बहुत कुछ भी कर लेते हैं तो sometimes that is forgiven. For girls particularly, it is to be well taken care of. Then what happened, he shared it and he shared with his friend and the things became viral. ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ that was notorious for one thing ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ obscene films ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ CDs ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. and the thing became so viral ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ CD ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. now being girl, being a human, you could understand what could be the predicament of girl at that time and what the family would have been feeling for the same. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. that news channels also started casting it, this happened, that happened. Okay, the father of the girl, he thought that cameramen used to be standing in front of their home. What happened to your girl? This happened. Boy has done this. Okay, this is media has to do it. We don't have any sort of complaint with the media because they have to do it. Then the father of the girl, he thought that I will send my daughter abroad. And he arranged money, he sent the daughter abroad, but the people won't let him live. Questions used to be there, and it is always when you could not bear up with the pressures, he again committed suicide. And none of the reporters reported that even later on that this has happened. Till that they were vibrant enough to discuss, to open it, but afterwards nobody turned up. Still another story. ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਸ ਆਪਾਂ we will take up that. I have been teaching and it is again story of a small city. There also one boy, now he is on a top position and he has been selected as civil servant at that time. He is in touch with me
He's a wonderful boy. He turned up to me that, ma'am, I am so upset. I was in a relationship, this happened, that happened, and she has left me. Now I am going to kill myself. Then I said that, why you are keeping that attitude? Nobody can help you. You cannot call anyone. ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਬੈਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਅ ਮੈਸੇਜ ਯੂ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਅਪ and you get the number and it's easily accessible. Earlier things were not so easy. The things I am talking about, because I started my teaching career at the very early stage. I was just 22 years old when I started my teaching career. And I was fond of teaching. I used to make my brothers and sisters sit also, and I am going to teach you. that was always in me. Because from the very beginning I was passionate about it. Yes, I have to teach. May not been able to continue with that literature part because I am there in the communication skills department, so I have to just teach these skills only. These stories and anecdotes we cannot share normally. So I got the chance today, so I thought that I would start my beginning from there only. Then he said कि नहीं मैं तो इतना हो ही नहीं सकता मैम, वो बेवफा है. Could you tag anyone like this? Couldn't you take that liberty? That person has his individuality. बंदे दा मन करता है, then it's okay. If she or he doesn't feel like, then how would you impose yourself on that person? जिन्ने भी cases ਹੁੰਦੇ हैं, even when being a student here, this is a very normal thing that you are going to have infatuations. ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ infatuations ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ quickly start ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ you are easily accessible to each other on phones and others, ਉਨੀ ਜਲਦੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ end up ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. That's why you need not to be serious into these things. This is just a part of crush that you have on someone, and yes, you feel like, you start feeling like, yes, this is my life. No, your life is your life. It's not that you are going to be dependent on anyone, or emotionally you have not to be weak enough. You have to be very much strong and practical for the things. Practical ਹੋਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, that leads you to some word of insecurities and uncertainties. ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ you cannot be so thick skinned. ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠਣਾ, that is very very important. And you have to be that type of person. You have to focus on your studies, you have to focus on your skills, because this platform is not for what we were discussing. These things sometimes go into our life, but ultimately the focus is ought to be on your academics, on your personal life, on your personal self, on your health, on your hygiene. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਅਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਸਟਮ कि मैंने डिप्रेशन है. आई yesterday one girl was asking कि हाँ मुझे मेंटल हेल्थ इशू है. कुछ भी नहीं है मेंटल हेल्थ इशू. दिस इज ऑल what you have created within yourself. ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, you have to come out of that creation. You have to come out of it. letting go, ਜਾਣ ਦੋ, ਦਫਾ ਹੋਣ ਦੋ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. लॉर्ड बुद्धा रिनंसिएशन, सारा कुछ छड्ड के चले जाना और एक राजे का पुत्र होना, इस तो वड्डी एग्जाम्पल लेटिंग गो दी नहीं है. लेकिन उस तो भी वड्डी एग्जाम्पल उसकी वाइफ दी है, यशोधरा. वट शी डिड, उन्हें की कीता सीगा व्हेन बुद्धा लैफ्ट, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਨਾਊਂਸ ਦ ਵਰਲਡ. ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ. ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਬਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਹੌਂਟਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ. But things could not be, and it was with the case with the parents of Lord Buddha also.
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਂਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਨ ਦ ਕੁਐਸਟ ਆਫ ਗॉड ਹੀ ਮੇ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਵਾਸ देयर, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਹੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟਰੂ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਲੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੀ ਲੈਫਟ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਰਲ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਹਾਇਰ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਪਰਪਸ, ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਰਿਗਰੈਟ ਇਨ ਹਰ ਮਾਈਂਡ। ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੀ ਲੈਫਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੇ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦੈਨ ਦੋ ਦ ਪਰਸਨ ਡਿਡਨਟ ਟਰਨ ਅਪ ਬੈਕ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਬੁੱਧਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਡਿਡਨਟ ਟਰਨ ਅਪ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਦੈਨ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਹੀ ਬੀਨ ਟੂ ਹਰ room and there also he said, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਿਕਸ਼ਾ। and she felt, she said at that time ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and asking for ਭਿਕਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਿੰਗ ਗੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਲੈਟਿੰਗ ਗੋ ਐਟੀਟਿਊਡ that what is with us, clinging to past and clinging to the things which are there, that is always dangerous for a person. Whatever we are storing in our unconscious mind, and in that reactive mind we are adding up the things, that is one a part of our negativity. ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ we have to take it out, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ we have to remove that negativity, we have to leave that relationship, we have to leave that place which is torturing us, which is giving us any sort of pain, or which is giving us any sort of problem to our health, mental health specifically. You may be very much conscious about your physical health, but at the same time mental health is also equally important. Rather, in this world of technology, it is more important to focus on your कौन सी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो अफसाना जिसे पाना नामुमकिन हो, उसे ज़िंदगी में एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ये बात आपने ज़िंदगी में you have to learn it. Yes, things could not go with us. Things could not be the part of our life all the time. It has to be like that. Whatever is good, whatever is beautiful, and purpose of life is different for each and every individual. ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, what I got out of it, what I received out of it.
some people have not come here to just take. They might have been here to give and to impart and to be successful in some other manner. It is never only in the fiscal, in the financial issues that yes, you are successful. You are, even the student who is studying here, even if you are average one, एक average ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ achievement ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ better ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। rather ਜੇ ਅਸੀਂ record ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ average student ਹੁੰਦੇ ਆ, they are more successful in their careers. Those who फिर हमें 2 वीडियो क्लिप्स दिखाई गई। पहले वीडियो क्लिप में तो ये था कि जो इंसान है वो कैसे भेड़ से बार बार उनसे उनके बाल लेके फिर अपने लिए क्लॉथ बना रहे थे एंड ये सर्कल बार बार चली जा रहा था। जब भी भेड़ के न्यू बाल आते थे पीपल उनसे उनके बाल लेके फिर अपने लिए क्लॉथ बना लेते थे एंड वो हैप्पी थे। एंड उसके बाद जो सेकंड स्टोरी थी उसमें ये था कि एक बच्चा था जिसका सब बचपन से ही सपना था पायलट बनने का। वो पायलट बनने की तैयारी के साथ साथ अपनी मदर के साथ केक बनाने में हेल्प करता था एंड केक की डिलीवरी करके आता था और अपनी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। एंड एक दिन क्या होता है कि वो एग्ज़ाम दे के आता है एंड वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो फ़ेल इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा केक बनाने में बिज़ी रहता था एंड केक डिलीवरी करने के आता था इसलिए वो फेल हो गया। फिर वो अपना शीट लिया एंड उसने कुछ नहीं कहा, वो उसने एक टेबल पे रख के चला गया एंड वो सब चीज़ें रियलाइज़ करने लगा। उसकी मदर ने देख लिया एंड उसकी मदर ने ड्रीम वाला एक कागज़ उसके बुक में रखा एंड वो उसको सदमा लग गया कि उसका बच्चा फेल हो गया। फिर उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई एंड देन जब उसने उस बुक में अपना वो कागज़ देखा फिर उसने अपने सोच लिया कि सपना मैंने पूरा करना। वो सपना पूरा करने के साथ साथ स्टडी भी कर रहा था, अपनी मदर का भी ध्यान रख रहा था, केक भी बना रहा था और केक बेच के भी रहा था एंड अपनी बहुत सारी स्ट्रगल के बाद वो पायलट बन जाता। तो हमारी लाइफ इजी नहीं है, हमको इजी बनानी पड़ेगी एंड अपने ड्रीम में भी फोकस करना पड़ेगा। अगर स्ट्रगल आ रहा है तो वो भी हैंडल करना पड़ेगा। अभी हमने लेक्चर अटेंड किया था, अब हम जा रहे हैं गेम खेलने, देखते हैं कैसा है। तो HP कंपनी वालों की तरफ से ये टीम आई थी एंड इन्होंने अपने लैपटॉप के बारे में हमें बताया। फिर उसके बाद हमें लैपटॉप यूज़ करने का भी मौका दिया तो मैंने भी लैपटॉप यूज़ किया एंड फिर उसके बाद यहाँ पे PUBG पता नहीं फ्री फायर पता नहीं क्या खेल रहे थे। मुझे तो देखो ये वाली गेम आती नहीं, पहले मैं सोचा कि मैं खेलती हूँ बट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर मैंने ये गेम छोड़ी। तो यहाँ पे एक और गेम थी वो थी किड्स से रिलेटेड, वो मैंने खेली। These questions are out of syllabus. Reason I am student of BBA and this syllabus relate to BTech students. Yes guys, तो जो ये क्वेश्चंस थे वो BTech स्टूडेंट्स के लिए थे और अटेंड करने गई थी BBA की स्टूडेंट। बट फिर भी गाइज मेरे आधे क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो राइट थे एंड बहुत मज़ा आया करने में। एंड गाइज बस के अंदर जो इन्होंने सेटअप किया था वो बहुत ही अच्छा सेटअप था।
तो ये बैंड थी जिसमें हमने गेम खेला नहीं, ओनली देखा, बिकॉज गेम मुझे खेलनी नहीं आती है। नाउ वी गोइंग स्टेडियम। थर्ड लेक्चर स्टार्ट हुआ। ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने यहीं इसी कॉलेज से स्टडी की है, ये अभी कनाडा रहते हैं। I'm very happy to see all of you here. The only problem is in this video I cannot make out the faces. But I know there are a lot of my teachers in the front row. Hello and thank you for everything. I know Govindarpal ma'am has talked about me not being interested in teaching, but this session and my life in general has always been defined by what our teachers teach us, not just in terms of a subject, but also in our lives as a person, and that is why I am always thankful to my teachers. Apart from the subjects, all that I've learned, be it in school, be it in college, anywhere I go, that I think is a very important learning in how to lead life. Anyway, I wanted to actually talk in Punjabi today because I thought it's important to get the message across, but I'm told we have a few non-Punjabi students as well, so I'll try and stick to English. What I want to talk today is a lot more than engineering. Actually, a very little about engineering because I think. Continue in Punjabi. Because I think. Okay, ठीक है. पंजाबी इस तरह के कि मैंने लगता है कि ज़्यादा impactful होता है, भी ज़्यादा message जाया जाता है. You know, साढ़े तक सब. Okay. Anyway, जे पंजाबी तो ठीक है. I hope कोई भी ऐसे जो students नहीं है ਜਿਹੜੇ नहीं समझेंगे, but okay. So yes, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ YouTube ਦੇਖਣਾ, Netflix ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਰੋਂਗ ਔਰ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋਸ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ देन कॉलेज के एक सीनियर स्टूडेंट ने हमें कॉलेज की और इन्फॉर्मेशन दी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਬਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, NCC NSS ਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Song ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NCC ਦਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ NCC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਰਿਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਨਸੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ कॉल कर लियो, नंबर तुम बता देना। तो अभी हम आए थे कैंटीन लंच करने के लिए एंड लंच करके भी हम जाएंगे फिर स्टेडियम में, जो कि आधे घंटे की फिर से है लेक्चर। अभी लंच हमने कर लिया है एंड देन अभी हम बैठे हैं बिकॉज अभी भी आधे घंटे रहते हैं लेक्चर स्टार्ट होने में, जब तक हम आराम कर रहे हैं कैंटीन में बैठ के। अब हम जा रहे हैं स्टेडियम फिर से लेक्चर अटेंड करने, फिर इसके बाद गेम होगी। तो गेम है आज की हमारी बैडमिंटन, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक भी बने रहना। After completing his PhD, he has further guided 6 PhD students, approximately 14 MTech students, and a number of publications in international journals. Moreover, to add to it, he has 4 patents in his name. These are his academic excellencies that we have just talked about, but except these excellencies, he is a great YouTuber. You can see the link also. You may open the channel, may subscribe to. I extend a very warm welcome to all the students to this prestigious BBSBEC family. So students, today is 3rd day of your induction program. तीजा दिन है छोटा induction program दा? Yes sir. हाँ जी, तीजा दिन है दूजा? Okay, so today is 3rd day of your induction program. And whenever we are attending any type of this type of program or any class, we must know the basic objective about that subject or about that class. जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ देखिए, जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है, ठीक है, और एक लिखा होता है कोर्स आउटकम्स। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, बिफोर गोइंग थ्रू दोज कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने बिना पढ़े जे तुसी सब्जेक्ट पढ़ते हो कोई भी, देन यू आर मिसिंग मैनी थिंग्स, ठीक है। एंड करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, विदाउट नोइंग दैट ऑब्जेक्टिव मे बी अगर जो भी आपका इसका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो फुलफिल ना हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडक्शन प्रोग्राम का? ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, दे आर अंडरगोइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन, ए फेज चेंज, अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन योर लाइफ, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि जब भी किसी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है, जैसे वाटर जो है अगर उसने आइस में चेंज होना है या उसने वेपर्स में चेंज होना है, देन व्हाट यू रिक्वायर, क्या चाहिए हमें? अगर फेज चेंज करना है वाटर का, यू रिक्वायर लेटेंट हीट, ठीक है। सो दिस इंडक्शन प्रोग्राम इज बेसिकली लाइक लेटेंट हीट, क्योंकि आप स्कूल में पढ़े हो 10-12 साल, and now all together you are going into a very new phase, ठीक है, a totally all together different environment। तो वो फेज में जब आपने ट्रांसफर होना है, चेंज होना है, तो उसके लिए दिस इंडक्शन प्रोग्राम इट विल एक्ट एज लेटेंट, ठीक है। तो आपको ये एक तरह से प्रिपेयर कर रहा है कि 8-10 दिन में आपको जो नया माहौल है, ठीक है, उसके अनुसार आप अपने आप को चेंज कर दें। दैट इज द मेन रीज़न फॉर कंडक्टिंग दिस इंडक्शन प्रोग्राम। आप सेटल हो जाएं, एट द सेम टाइम यू गेट फेमिलियर विद द कॉलेज एनवायरनमेंट, कॉलेज को देख लें, ठीक है। पढ़ाई जो है वो 8-10 दिन बाद में भी शुरू हो जाएगी, तो उसका कोई इतना ज़्यादा
आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 4 साल, क्योंकि आपने पढ़ना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ए स्पेशली डिजाइंड इंडक्शन प्रोग्राम एंड इट इज डिजाइंड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। जितने भी इंडिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय AICTE। तो ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है दिस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, नॉट एग्जैक्टली करिकुलम बट दिस इज ए पार्ट ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इन ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस द कंट्री। तो ये कल आपने जैसे ट्री प्लांटेशन की, ठीक है, हम कोई भी पेड़ जब लगाते हैं तो सैपलिंग जो हैं उनको हम लगा देते हैं एंड फॉर फ्यू मंथ्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सैपलिंग, ठीक है। अगर आप उसको प्रॉपरली पानी नहीं दोगे, टेक केयर नहीं करोगे, व्हाट विल हैपन, वो सूख जाएगा। बट उसके बाद क्या है, वंस इट इज ग्रोन, उसके बाद द ट्री कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, अपने आप से वो अपनी देखभाल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई, जो भी गल्लां कीतियां ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, पता ही है तुहानूं, ठीक है। दूजी गल जिहड़ी करांगा वो भी पता ही होएगी, तीजी गल है जिहड़ी वो भी रूटीन नहीं कर। दूजी गल की है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कि घोंसले दे विच जदों छोटे छोटे बच्चे हुंदे हैं, भावें चिड़ी होवे, भावें बाज होवे, इल्ला होण, कोई भी पंछी होवे, ठीक है, देन टिल सम टाइम मे बी फॉर फ्यू डेज और फॉर a couple of months the parents have to take care of their kids, ठीक है। ਜਿਹੜੇ छोटे पंछी ਹੁੰਦੇ हैं उन्होंने पेरेंट्स हैं ਜਿਹੜੇ वो दाना लिया के देंगे हैं, ठीक है, उन्होंने बचाते हैं किसी भी तरह की एडवर्स एनवायरनमेंट को, गर्मी को, सर्दी को, ठीक है। बट अप टू ए सर्टन टाइम उस तो बाद की है, फिर ਜਿਹੜੇ भी बच्चे होंगे हैं बड़े हो जाते हैं, ठीक है। वंस दे आर ग्रोन अप, वंस दे आर एबल टू फ्लाई, ठीक है, दे लिव देयर ओन लाइफ। इस तरह तुसीं देखिया होना भी जिहड़ी बिल्ली हुंदी है वो बच्चों मूँह दे विच चक के एक जगह तो दूजी जगह लैके जाती है, ठीक है। तो इदां उन्होंने शिफ्ट करती रहती है टू इंश्योर देयर सेफ्टी, ठीक है। उस तो बाद जो बच्चे बड़े हो जाते हैं then they live their own life। तो ये 3 गल्लां मैं क्यों कीतियां, क्योंकि जिहड़े फेस चेंज की मैं स्टार्टिंग च गल कर रहा सीगा, you can correlate that phase change with these 3 little stories, ठीक है। Now you people are out of the comfort of your home, ठीक है, all together you are going to start a new life, ठीक है। तो जो भी पिछलियां पुरानियां गल्लां सी, घर दे विच रोटी तुहानूं बैठे मिलदी सीगी, बहुत वधिया घिओ दे नाल चोपड़ी हुई रोटी, ठीक है, AC लगा होया, TV देख रहे हो, सवेरे सवेरे तुहानूं आके मम्मी ने उठाता, उठ जा भाई पढ़ लै, ठीक है। तो वो सारियां चीज़ां हुण जिद्दां नैस्ट सीगा, घोंसला सीगा, उहदे च रह गई, ठीक है। सो द मेजर चेंज that you are going to experience from now onwards is you will have more independence। सर ने हमें बताया कि स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी है एंड ये क्या रोल प्ले करती है हमारी आने वाली लाइफ में, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे एंड हमारी स्टडी पे। दो सॉन्ग्स दियां एक एक लाइन बजावांगा एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है।
उसके बाद सर को सम्मानित किया गया एंड हम खेलने गए कैरम बोर्ड एंड चेस में ऑप्शन था तो मैंने कैरम ही लिया बिकॉज चेस तो मुझे वैसे भी नहीं आती थी। तो मेरी टीम में ये 3 लड़के थे एंड मैं अकेली लड़की थी तो मैंने इनके साथ गेम खेली। बैडमिंटन खेलना कैंसिल हो गया था, वो किसी और टीम को मिल गया था, हमारी टीम के हिस्से में कैरम एंड चेस आ गया था। तो ये गेम इंजॉय करने के बाद हम घर गए। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, आज हम लिफ्ट में आ चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं। अब हम 2 मिनट बाद निकल जाएंगे। ये ड्रामा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे लिफ्ट में चक्कर भी आ रहे हैं। ओह ये है। तो आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आज और भी बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने। तो अभी इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहना और भी वीडियोस के लिए, क्योंकि अभी 2 हफ्ता कहा था तो अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, अभी और दिन भी पड़े हैं और कॉलेज में बहुत कुछ न्यू होने वाला है एंड वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। ओके बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।